Hello everyone. So today we will study about the EIA steps involved in EIA. First of all, let me introduce about EIA. EIA is environmental impact assessment, in which we predict the effect of a proposed project on the environment. It is a necessary step to require environmental clearance of a proposed project. So let's study its steps. First is screening. So in screening, it decide whether EIA is required for the project or not, based on the type, size, location and sensitivity of the project. And its second step is scoping. Identify key environmental issues to be studied. हमें स्टडी करनी किस चीज़ की है, वेदर एयर, वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी, सोशल, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा. वट टू फोकस, इनमें से हमारा कंसर्न किस चीज़ का है, हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड. एंड देन थर्ड इज बेसलाइन डाटा कलेक्शन. स्टडी द करेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द एरिया. जिस पे एरिया पे हमें अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना है, उसकी एट प्रेजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखनी है. इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हर एक चीज़ हमें कवर अप करनी है. उस वहाँ की एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल, नॉइज़, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, लैंड यूज, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा. एंड देन impact prediction. Predict possible environmental impact of the project. We have to identify either its effect is positive or negative, but we have to identify what will be the impact, short term and long term, direct and indirect. We have to find all impact related with our project. And then mitigations suggest way to avoid, reduce or compensate adverse impact. Include pollutions control, waste management, green belt, rehabilitations, use of alternative. बेसिकली क्या होता है कि मिटिगेशंस में अब हमें इम्पैक्ट पता लग गए, उसका जो सॉल्यूशंस है वो हम मिटिगेशंस मेज़र में प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं. मिटिगेशन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मिट्टी पाना, उस पर मिट्टी पाना विद सॉल्यूशंस देके. एंड देन सिक्स्थ इज पब्लिक कंसल्टेशंस. टेक फीडबैक फ्रॉम लोकल्स एंड अदर्स stakeholders. Public hearing consultation is important to understand people concerns and suggestions. हमें जहाँ भी अपना प्रोजेक्ट हम अपना सेटअप करने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए क्लियरेंस लेने जा रहे हैं, तो हमें वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं, जो भी लोग हैं, हमें उनका कंसर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेना अपने इस प्रोसेस के अंदर. एंड देन EIA रिपोर्ट प्रिपरेशन. प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिपोर्ट विद all finding. We have to mention the all thing that we done above. Include project description, baseline data, impact assessment, mitigation plan, environmental management plan, summary, etc. And the next is decision making. Authority decide whether to approve or reject the EIA report, and public feedback. Environmental clearance is given with specific conditions. And then is monitoring and compliance. Ensure that the project follows the rules and conditions. अगर प्रोजेक्ट को अगर परमिशन मिल जाती है, उसके बाद भी हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वेदर द प्रोजेक्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कंडीशंस और नॉट. रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स. इंश्योर कंप्लायंस ऑफ मिटिगेशंस मेजर. जो सॉल्यूशन प्रपोज्ड किए गए थे मिटिगेशंस मेज़र में, उनका ध्यान रखा गया है कि नहीं. एंड इज इट द प्रोजेक्ट फॉलोज द लीगल कंडीशंस और नॉट. अब आप नीचे देख सकते हैं फ्लो डायग्राम फॉर द रिवीजन एंड शॉर्ट ट्रिक, जिसे इसको SBI इसके नाम से याद कर सकते हैं. उसके बाद MPRDM. First is screening, scoping, baseline, impact, mitigations, public report, decision, monitoring and compliance. EIA is a systematic process to identify, predict and evaluate environmental impact before a project is implemented, so that development and environment can go hand in hand.
Thank you.